And here we will discuss to the furtherance of that topic, what we have covered in the previous semester. And the thing is that we start from the introduction, the basic one, and then we'll go into the details of it. Okay, so we have a speed control of DC motor. This is an experiment is also done on the very same. So still we will have a brush up of these methods, and we'll talk about some more details of these control methods. Okay, so you very well know that a DC motor can be classified on the basis of the connections what you have in between your armature and the field circuit. The armature circuit is that circuit in which the main working voltage is induced, and the field circuit is that circuit in which the main working flux is produced. देखो होता ऐसा है कि इट्स नॉट दैट कि वोल्टेज कहीं और इंड्यूस नहीं होती आर्मेचर के अलावा, वोल्टेज तो कोर में भी इंड्यूस होती है, तभी उसमें एडी करंट्स वगैरह होती हैं जैसा हुआ है, ठीक है, और भी जगह स्ट्रे वोल्टेजेस इंड्यूस होती हैं. Wherever there is a relative motion between a conductor and a magnetic field, a voltage is induced. तो जहाँ जहाँ भी आपको जो है एक कंडक्टर मिलेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और दोनों में एक रिलेटिव मोशन होगा, वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस ज़रूर होगा. बट द मेन वर्किंग वोल्टेज, it is about the coil in which the main working voltage is induced, is known as आर्मेचर. ठीक है, और उसी में ही आपके पास एक और उसका फर्दर वो आ जाता है कि आपके पास आर्मेचर रिएक्शन भी होता है इन केस ऑफ डीसी मोटर्स. उसमें भी, और उसमें दूसरी मशीन्स में भी है जहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन होता है. सो दैट्स वेरी सेम थिंग हैपेंस ओवर देयर, इज दैट whenever you have, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी ऑल अराउंड द मशीन्स, और आपको पता भी होगी that whenever there is a relative motion between a conductor and a magnetic field, an EMF is induced in the conductor. And whenever there is a current, there is always a magnetic field associated with it. जहाँ पे भी आपके पास करंट होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगी उसकी, because that produces a magnetic field. And the second thing is that it depends upon the type of current, that what are the properties of those of that magnetic field. अभी हमने उसके इस्तेमाल की कोई बात नहीं करी है, बस इतनी बात करी है कि जहाँ पे करंट होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. The second thing is that if the current is alternating in nature, the magnetic field will be alternating in nature. And if the current is of a constant value or a direct current, in that case the magnetic field is also considered to be a static one. ठीक है, यानी उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है आपके पास. उसी हिसाब से जो है वो आपके पास, उसी हिसाब से जो है वो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है. ठीक है, तो उसके फिर, और आर्मेचर में करंट होगी तो उसकी वजह से जो फील्ड बनती है तो वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है. ठीक है, आप लोड बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है, जब करंट बढ़ती है तो व्हाट हैपन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस. ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं कि उसका ओरिएंटेशन क्या है और वो सारी चीज़ें, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, वो सारी आप उसके एनालिसिस में जाओगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी. बट ऐसा नहीं है कि दैट द फ्लक्स इज नॉट प्रोड्यूस इन द आर्मेचर. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर करंट की वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता है जो फ्लक्स होता है. ठीक है, तो द फील्ड इज दैट सर्किट इन विच द मेन वर्किंग फ्लक्स इज इंड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आर्मेचर की वजह से जो है वो फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, बट दैट इज नॉट कॉल्ड एज द फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि उस वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है आर्मेचर में और उसी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. बट इट इज़ नॉट दैट वर्किंग फ्लक्स, इट इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग द वर्किंग फ्लक्स. वर्किंग फ्लक्स कौन सा होता है हमारे पास, कि आपके पास दो रूल्स होते हैं बेसिक. यू हैव ए मोटर रूल एंड अ जनरेटर रूल. मोटर रूल जो हमने अभी बताया, दैट whenever there is a relative motion between generator rule, whenever there is a relative motion between a conductor and a magnetic field, an EMF is induced. तो आपका जनरेटर बनता है, एंड whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force.
ठीक है, ये तो आपका ये मोटा रूल बनता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो है आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर बनता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है एट लास्ट में। ठीक है, और वो दोनों अलग अलग होते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो वाला सर्किट, और जहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला सर्किट, ये दोनों सर्किट्स अलग अलग होते हैं। इवन दो यू हैव fluxes and voltages induced oppositely also, यानी जब आपके पास आर्मेचर कंडक्टर रोटेट कर रहे हैं, तो जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है, आर्मेचर रिएक्शन जो कहला रहा है, तो आपके पास जो फील्ड सर्किट है डीसी के केस में वो स्टैटिक इन नेचर है, तो वहाँ स्टैटिक कंडक्टर्स मौजूद हैं। और यहाँ आपके पास एक डीसी करंट फ्लो हो रही है, और क्योंकि वो रोटेट कर रहा है आर्मेचर, तो एक रिलेटिव मोशन बनेगा बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ द फील्ड एज वेल एज एंड द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर। ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन, तो उसकी वजह से भी जो है वो एक डिस्टर्बिंग इफेक्ट उस पर आएगा। ऐसे ही आपके पास वेन एवर यू हैव ए फील्ड करंट टू बी फ्लोइंग इन दैट, तो वहां पे फ्लक्स बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और अगर उसके लिए कोई जो रिलेटिव मोशन बनता है दैट इज द आर्मेचर कंडक्टर्स, तो वो मेन वर्किंग वोल्टेज बनती है उसकी। दैट मीन्स व्हाट इज डिजायर्ड। सो वट एवर इज डिजायर्ड is also produced at that point or that part of the circuit, and that is considered to be the main working वेरिएबल। जैसे मेन वर्किंग वोल्टेज जो है आपके पास आर्मेचर में, क्योंकि आपको वहाँ वोल्टेज इंड्यूस चाहिए है, उसी के लिए आप ये सारा अरेंजमेंट बनाते हैं कि आप एक फील्ड सर्किट बनाएं, चाहे वो बाहर से सेपरेटली एक्साइटेड हो, शंट एक्साइटेड हो, या फिर परमानेंट मैग्नेट से ही बनाएं, आप जैसे भी बनाएं। द थिंग इज दैट यू वांट ए वोल्टेज टू बी इंड्यूस्ड इन दोज कंडक्टर्स सच दैट यू यूज इट एनीवे। जो भी आपको उसे इस्तेमाल करना है आप उसे इस्तेमाल करें उसी हिसाब से, बट इट इज योर इंटेंशन, सो दैट इज द मेन वर्किंग वोल्टेज। एंड फॉर दैट पर्पज, टू इंड्यूस दैट वोल्टेज, यू हैव टू प्रोड्यूस a relative motion between a conductor and a magnetic field. So for that purpose you produce a magnetic field either by any of these methods, जो भी आपके पास सेल्फ एक्साइटेड हो या सेपरेटली एक्साइटेड हो या परमानेंट मैग्नेट हो, कोई सा भी आप वो कर रहे हैं ताकि आपको फ्लक्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ द सर्किट, फील्ड सर्किट इज दैट पार्ट ऑफ द सर्किट इन विच द मेन वर्किंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाकी फ्लक्स और भी जगह होता है। ठीक है, बाकी करंट्स भी और जगह होती हैं, कोर में भी करंट्स होंगी, वो भी ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन की वजह से ही फ्लो होंगी, और सर्किट पाथ कंप्लीट इंड्यूस होंगी वोल्टेजेस, और सर्किट पाथ कंप्लीट होने की वजह से यू हैव द करंट्स टू बी फ्लोइंग। ठीक है, तो बट स्टिल दे आर नॉट कॉल्ड एज द आर्मेचर सर्किट और द फील्ड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्रोल, तो दो ही चीज़ का कंट्रोल पॉसिबल होता है, या इनफैक्ट डिजायर्ड होता है। द फर्स्ट वन इज द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, एंड द सेकेंड वन इज द फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। उस सर्किट में वोल्टेज चेंज करनी है हमें, जो हमारा जहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, और उस सर्किट में फ्लक्स चेंज करना है जिसमें हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई। एंड द थर्ड वन इज एक्चुअली ए कह लो कि टाइप ऑफ वन। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो है वो एक टाइप है, इसमें भी हम आगे बता देंगे थोड़ा सा। बट द मेन टू स्पीड कंट्रोल मेथड्स आर armature voltage control and field flux control. Even in armature resistance control, you go for changing the armature voltage or decreasing the armature voltage. ठीक है, तो ये एक और दो ही जो हैं आपके पास मेन मेथड्स होते हैं कंट्रोल के। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Let me also give you some basics of this. Just hold on for a minute or two.
Just wait for a minute. I'll be uploading a basic um, governing equations of these DC machines. Just wait for it. Okay, so we have this basic types of DC motors. What we have, separately excited DC motor in which we have the armature circuit and the field circuit, not to be connected anyway electrically. And the second thing is that you have different sources of excitation of this armature circuit and the field circuit. We are talking about DC motors. And the second one is the shunt or the self-excited motors in which we have the voltage source that supplies both the armature circuit and the field circuit and they are connected in parallel or shunt. ये दोनों सर्किट जो आपके पास आर्मेचर सर्किट आई जो है ए वन ए टू और F1 F2 फील्ड वन फील्ड टू आर्मेचर आर्मेचर वन आर्मेचर टू तो ये आपके दोनों जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए होते हैं इट इज़ नोन एज अ शंट कनेक्शन एंड दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स इस केस में जो है आपके पास दोनों सोर्सेज अलग अलग हैं ठीक है देन वी हैव दिस वन वी हैव ए series circuit. In case of a series circuit, we have the field winding to be connected in series with the armature winding, and it is known as denoted by S1, S2 generally. Okay, and you have A1, A2 like this, and they are connected to the same voltage source. Then you have a cumulatively compounded motor in which you can have a both effects of series as well as shunt winding ठीक है and there are different special cases in which you use these type of machines and these you have both two windings in case of field you have one connected in parallel or shunt and another connected in series to the armature and you can have long and short shunt connections depending upon the type of use what you require then you also have a differentially compounded machine जिसमें जो है इसी का एक अपोजिट कनेक्शन लगते हैं such that these field fluxes produced by armature and produced by series field circuit and the shunt field circuit actually oppose each other and they are made to cancel out a part of each other such that the net flux is reduced. So differential compounding कहलाती है वो special cases में इस्तेमाल होती है ठीक है तो the thing is that now we come to this part. What is an important one? This one. We have three basic equations that actually govern a full DC machine. Any type of DC machine, be it of any make, any rating, they are controlled and their analysis can be done based on these three equations and these are very well known equations. The back EMF or the induced EMF is proportional to flux and speed. अगर आप basic definition से देखें तो then you can say that rate of change of
flux d phi by dt actually decides E. ठीक है, तो ये आपने बैक ईएमएफ की इक्वेशन भी पढ़ी होगी, के ई फाई ओमेगा, ठीक है, और आपकी इंड्यूस वोल्टेज की भी इक्वेशन यही रहती है, एंड इट ऑब्वियसली जस्टिफाइज, एंड इन फैक्ट नॉट जस्टिफाइज, it justifies your basic law, that law of induction, that whenever there is a relative motion between a conductor and a magnetic field, an EMF is induced in the conductor, and obviously the relative motion, the amount of relative motion actually decides the amount of voltage induced. वो ज़्यादा होगा relative motion दोनों में, rate of change of flux जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा induced EMF, d phi by dt जितना ज़्यादा होगा, तो exactly the induced voltage depends upon flux and speed directly. The second voltage is, second equation 5.2 as shown over here is the simple KVL across the circuit shown in 5.2, ठीक है, figure 5.2 के V is equal to E plus IARA, ठीक है. If you have a generator in this case, what will happen, that the direction of current will be towards this V, that is the output voltage V. तो क्या होगा कि ये प्लस ये माइनस तो रहेगा ही, करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इट विल बी आउटवर्ड. सो व्हाट विल हैपन नाउ, E इज इक्वल टू आई आर ए प्लस वी, यानी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा. ये बेसिक इक्वेशन के वी एल ही रहेगी, ठीक है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज की इक्वेशन रहेगी ये वाली, और ये आपके पास के वी एल ही रहेगी. एंड देन यू हैव द थर्ड इक्वेशन, the torque is proportional to flux and current. ठीक, so when you talk about flux and current, the very same law applies over here, that whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences a force. So it is the very same equation. ठीक है, तो तीन equations बनी है आपके पास, इंडक्शन की, वोल्टेज इंडक्शन की, KCL एंड द मोटर रूल. ठीक है, तो आप इसे जनरेटर रूल कह सकते हैं, ऐसे केसीएल कह सकते हैं, और इसे आप मोटर रूल कह सकते हैं. जनरेटर रूल, केसीएल, केवीएल एंड मोटर रूल. These three equations actually decide that how your DC machine is going to perform. And obviously there are special cases in this. Special cases means that, जैसे हमने अभी जनरेटर के लिए बताया, that this KCL obviously this KVL changes in that case, कि आपके पास इसे आप E minus IARA भी लिख सकते हैं, so this can be changed, और E is equal to V plus IARA भी लिख सकते हैं, ठीक है. So that actually changes over here. So now based on these three equations, what we have is that we just manipulate these and find out the value of omega. ठीक है, E की वैल्यू निकाल ली हमने इसमें से, E माइनस E इज इक्वल टू V माइनस IARA, ठीक है, और आपने जो है E की वैल्यू की जगह ये रख दिया, देन यू रीच टू दिस. ठीक है, E में आपने ओमेगा अपनी जगह रख दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, E इस तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, और V इधर ले गए, एंड देन आफ्टर दैट यू सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ E ओवर हेयर, जब E हम इस तरफ ले आए थे. तो देन वी मैनिपुलेटिंग वी हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू बी लाइक दिस. ठीक है, इन दिस केस अप टिल नाउ वी हैव नॉट decided anything about the type of connections what we have in case of DC machines. Either it may be a series circuit or a shunt circuit. अभी तक हमने कोई इसकी बात नहीं करी है. ठीक है, now this equation will be manipulated based on this. And now also one thing more, further introduction of this third equation in this one will yield to the change of IA with T. ठीक है, so this becomes the speed current relationship, and this becomes the speed torque relationship जो हमने बात करी थी अभी तक. ठीक है,
And the second thing is that here we consider all these to be constant for the time for which they are considered. ठीक है, जैसे आपके पास इसमें क्या क्या बनता है, आपके पास वोल्टेज का टर्म है, इनपुट वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है, ये के तो कांस्टेंट है ही है, द फ्लक्स इज केप्ट कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, आर ए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक बार बन जाता है तो उतना ही रहता है, के इज अगेन ए कांस्टेंट एंड फ्लक्स इज आल्सो considered to be constant for that particular case. Then you can plot the values of different values of omega, different values of omega for different values of IA. Similarly, you have omega over here, 5.5 में जैसे आपके पास, and you can have different values of omega for different values of t. ठीक है, तो you can have an omega, have a omega I characteristics and omega t characteristics. Omega I is important in terms of the source characteristics, that how the source is going to bear that particular machine. ठीक है, तो उसमें क्या है आपका कि जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी, ऑब्वियसली स्पीड changes in between 0 till the rated speed if you are considering a simple motor. So what happens in that case is that your source and you plot the current for and you know the current for these speeds, so you will have to check that whether your source will be able to supply that current or not, because ऐसा हो सकता है कि that you may have a voltage rating, a particular voltage rating है आपके पास, और उसमें क्या है कि इट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट मच अमाउंट ऑफ करंट. जैसे आपके पास कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, योर इट मे हैव ए करंट रेटिंग ऑफ से 5 एम्पियर्स, 2 एम्पियर्स, 3 एम्पियर्स, ठीक है, एंड द सेम 12 वोल्ट battery is applied for larger applications which requires hundreds of amperes of current at times. ठीक है, जैसे आपने अगर ईवी में लगा दी वो 12 वोल्ट की बैटरी जो है, तो उसमें जो है वो करंट रिक्वायरमेंट 40-50 एम्पेयर तक चली जाती है, एंड यू कैन हैव ए वेरी सेम वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए टॉय कार ऑफ 12 volts or some small applications having 12 volt supply. So it may not be able to produce that much large amount of current or provide such large amount of current. So omega I characteristics are important in that respect, that you actually choose the type of source for that particular drive system. इसीलिए omega I characteristics बनती हैं. Omega T characteristics बनती हैं that whether it can drive that load or not, and omega I characteristics are drawn that whether the source is able to supply that load current or not. तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं मोटर की, जो ओमेगा आई कहलाती हैं, और ओमेगा टी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं एक मशीन की. ठीक है, तो जो अगर आपके पास एक मोटर है तो उसमें इनपुट क्या जा रहा है, करंट जा रही है, और आउटपुट है आपके पास टॉर्क को. दैट इज वाई ओमेगा आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स and omega t are available at the shaft or the output of the machine, so they are known as the output characteristics of the machine. ठीक है, तो ऐसे करके हम इसे आगे करके लेके चलते हैं. नाउ we have these two equations as the input characteristics or the omega I characteristics and omega t characteristics as the output characteristics. तो जो भी हमारे पास मोटर्स हैं एनालिसिस हम आगे करेंगे, तो उसमें हम जो हैं इन्हीं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कंसिडरिंग द टाइप्स ऑफ कनेक्शंस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमने अभी पीछे शंट और ये करे हैं. तो एक एक करके हम इसे करके लेके चलते हैं अबाउट दीज टू, हाउ दैट हाउ योर मोटर रिस्पॉन्ड्स टू इट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट लिखा हुआ है. व्हाई? बिकॉज दे बिहेव एज अ वेरी सेम वंस. कैसे? लेट मी शो यू. दीज आर द टू सर्किट्स. ठीक है, तो ये आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड है, तो इन विच यू हैव ए कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड to the field circuit,
एंड ए कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई टू द फील्ड सर्किट लाइक दिस। तो जो भी आपके पास सोर्स लगा हुआ है उससे इसने कांस्टेंट वोल्टेज F1 F2 पे मिल रही है। The very same thing happens over here, not depending on the current of this much of the armature. IF is always going to remain constant if V is constant. ये आपके पास पैरेलल में लगा हुआ है तो यहाँ कुछ भी करंट ये ड्रॉ करता रहे, that does not matter. IF is going to draw the same amount of current because its resistance is not changing, and if V is fixed, IF will won't change depending upon the value of IA. ठीक है, तो ये कंडीशन जो ये वाली है एग्जैक्टली वही कंडीशन इसके लिए बनती है। तो आइदर इट इज अ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन और ए शंट मशीन, इन बोथ दीज केसेस you consider your field current and in fact the flux to be constant। ठीक है, तो इन दोनों की एनालिसिस साथ में ही होकर चलती है। तो the very first thing what we have assumed over here is that considered over here is that the flux is constant, so ke phi जो है आपके पास, क्योंकि के भी एक कांस्टेंट है तो फाई अगर हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं तो दैट मीन्स इट बिकम्स अ फुल कांस्टेंट के। ठीक है, तो ऊपर वाली सारी इक्वेशंस में हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया उसे। सबसे पहले बेसिक इक्वेशंस जो थी आपके पास ये वाली, ये यहाँ पे जो आपके पास ये फाई था, दिस बिकम्स कांस्टेंट एंड दिस आल्सो बिकम्स कांस्टेंट। तो E is equal to K omega and T is equal to K I because phi is also mixed, say clubbed in this one। ठीक है, फिर हम इन वाली इक्वेशंस में जो है वो K phi की वैल्यू कांस्टेंट रख लेंगे। ठीक है, तो यू हैव दीज टू फर्स्ट इक्वेशंस, इसमें हमने K phi की जगह जो K रख दिया, इसमें भी K phi की जगह K रख दिया। ठीक है, तो एंड यू देन यू सब्स्टिट्यूट इट और यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट इट। तो के फाई जहाँ जहाँ पे आ रहा था यू सिंपली पुट द वैल्यूज टू बी कांस्टेंट लाइक दिस। ठीक है, ऐसी ये बात हो गई आपके पास स्पीड करंट की और ये बात हो गई स्पीड टॉर्क की। ठीक है, के इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट ओवर हियर। नाउ कम टू द एक्चुअल shape of the characteristics, how it would look like then। ठीक है, you have a separately excited machine and a shunt machine and you are going to plot omega I characteristics for this। तो इस केस में क्या होगा कि V is of a constant value, you have given a constant input voltage, K is also a constant। ठीक है, then you have RA to be constant, resistance of the armature, K again to be constant, and here it is the variable IA। So this equation is in the form of y is equal to minus mx plus c। ठीक है, y is equal to minus mx because this is a variable, m constant है आपके पास r और k, plus c, this is c, this is the intercept on the y axis। ठीक है, and this is the slope of the line विद ए नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी, इंटरसेप्ट उसका जो है वो पॉजिटिव ये वाला होगा। तो ओमेगा और आईए की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट ये बनेगा। सिमिलरली यू विल बी हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें के स्क्वायर हो जाता है, के की बजाय के, अगेन इट इज अ कांस्टेंट, स्लोप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिकॉज ये वाला स्लोप और ये वाला डिफरेंट है, बट इंटरसेप्ट वही रहेगा। अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स का शेप है, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव स्लोप लाइन विद ए सर्टेन पॉजिटिव इंटरसेप्ट। वी वी बाई एक पॉजिटिव वो है कांस्टेंट है, तो इसका एक जो कट करेगा वो एक पॉजिटिव स्केल पे कट करेगा ये, और इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसकी नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स देखें,
जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये किसी और चीज के लिए दिखाया हुआ है कर। सो व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल बी हैविंग अ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको शंट मोटर में जैसे आपके पास आती है, तो यू विल बी हैविंग अ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डीसी शंट मोटर। जो ओमेगा टी कैरेक्टरिस्टिक्स और ओमेगा आई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट विल बी ड्रूपिंग इन नेचर। ड्रूपिंग का मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ होंगी और एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा उस पर, ठीक है। नाउ द वेरी सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर डीसी सीरीज मशीन्स। सीरीज मशीन्स में क्या होता है कि दैट द करंट इन द, ये आपके पास, ठीक है, दिस इज अ सीरीज मशीन। सो वट एवर करंट इज फ्लोइंग इन द series winding is also flowing is also the same current that goes through the armature, because this is a series circuit. I पूरे उसमें change नहीं होता है. So here the current in the field circuit depends upon the current that flows through the field circuit, and in fact the flux is dependent upon the current that is flowing through this, and this current is actually the armature current. So the flux produced in this one, or the phi produced in this S1 S2, is actually dependent upon IA or proportional to IA. जितनी ज़्यादा करंट ये होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस होगा, कम होगी तो कम प्रोड्यूस होगा, बिकॉज द सेम करंट इज ट्रैवलिंग थ्रू दिस. यूजिंग दिस फिनोमेना यू हैव द सीरीज मोटर, और सीरीज मोटर में सबसे पहले क्या होगा कि दैट द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, द आर्मेचर करंट, ठीक है। तो जो आपके पास पीछे इक्वेशंस थी उसमें सारे फ्लक्स की जगह जो है यू सिंपली रिप्लेस इट विद आई ए. तो व्हाट हैपेंस इन दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी आपके पास यहाँ पे, ये के ई फाई आई ए था, तो इसकी जगह आप आई ए के एक साथ लिख देंगे इस फाई को, तो ये दोनों कांस्टेंट एक जगह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट आई ए इंटू आई ए हो जाएगा, दैट बिकम्स आई ए स्क्वायर. सो टी कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जैक्टली exactly आप यहाँ पे जब आई ए रिप्लेस करेंगे टी को, तो यू विल हैव these two equations. T is proportional to kf into ia. Kf, all these k's are constant, इनकी ज़्यादा फिगर नहीं करनी है. तो this becomes k is equal to I proportional to ia square, ठीक है. And then you have the current and the torque relationships like this, ठीक है. तो जब आपके पास इन्हीं इक्वेशंस में वैल्यूज ऑफ करंट और वो रखेंगे आप, तो यू सिंपली रीच टू दीज टू वैल्यूज. यू कैन पुट दीज एंड हैव ए, से कह लीजिए इसे अपने अपने से सॉल्व करेंगे. इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो है, बट यू विल रीच टू दिस वन. इस इक्वेशन के साथ जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, यू विल रीच टू the value of IA to be this, and the value of omega and T to be like this. So what you see over here is that you have a inverse relationship between the current and the speed over here, ठीक है. बाकी सारी ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं बची हुई, ठीक है. और ये उसका दूरी हो जाएगी सिंपली इनवर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे आपके पास होता है, और इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ बनेगी आपके पास के उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और ये नेगेटिव साइन बनेगा कि ये उसका ड्रूपिंग नीचे की तरफ आ रहा है. So what you find over here is that when you plot these two characteristics curves or the shape of these curves, you will be having the characteristics what you have drawn up till now, जो आपने उसमें बनाई थी मशीन्स में आपने बनाई थी कि जो आपके पास शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ड्रूपिंग इन नेचर थी, और जो शंट और सेपरेटली एक्साइटेड की जो कैरेक्टर वो है वो ड्रूपिंग इन नेचर है, और जो आपके पास सीरीज मोटर है उसकी हाइपरबोलिक टाइप ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. Okay, so now we have the characteristics of the machine to be drawn like this. Then further we'll talk about speed control. We have seen now that how the speed changes with these parameters on omega I and omega t characteristics. So first we have drawn the characteristics. Now we will alter these characteristics using the variables what are available in the basic equations of these DC motors. ठीक है. Anybody wants to ask anything regarding this? What we have covered today? नो सर. चलो ठीक है then. Thank you. सर हाँ बताओ. सर वो लास्ट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कैसे बन रहा था तो नहीं समझ में आया. ये जो है रुको एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ. ये जो तुम्हारा इक्वेशन आ रही है ये वन ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T. ओके सर. ठीक है ना. ओके तो सर. बनेगा ये. और ये तो कांस्टेंट है. देखो ये दिस इज अ कांस्टेंट. दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट. ठीक है. तो जो वेरिएबल है आपका ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T. और यहाँ ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू ये तो कांस्टेंट हो गया आपका इज प्रोपोर्शनल टू 1/A IA. तो y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 1/√x. जो ये कर्व्स होते हैं दोनों. ओके ठीक है. ओके. दिखा है समझ में. ये सर समझ में आएगी सर. रूट टी इज वेयर वाई वेरिएबल है. y इज इक्वल टू ये जैसे ओमेगा इज इक्वल टू या इन फैक्ट इज प्रोपोर्शनल टू ये आपका कांस्टेंट है. इसे आप छोड़ दीजिए. ये भी आपका ये सर ये. कांस्टेंट है. इसे छोड़ दीजिए. ठीक है ना. y ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/IA. ठीक है. और ये यहाँ पे सर. बनेगा ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T. ये सर. ठीक है. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बन जाएंगी. हाँ एक्स वाई इक्वल्स टू सी हो जाएंगे. ठीक है ना. थैंक यू सर. चलो ठीक. ओके.